Welcome to Levan channel. Today I received this DVR with no display problem. I show you how I repair this kind of DVR. Customer says it suddenly turn off. No image on LCD. First I show you the problem. I am using power supply with 12 volt. You can see it's consuming 0.7 something ampere, but no image on LED. I am removing the power supply. First we need to install new BIOS. We need to move the motherboard. I think first we need to remove the hard drive. I am going to remove EEPROM IC for BIOS reprogram. I am downloading BIOS from Levan site forum.levansite.com. You can also share your DVR BIOS on this forum to help others. It's free and always will be free.
write this file. Let's check the DVR. You can see it's consuming more ampere. As you can see, the DVR is working now. If you forget your password or the DVR is not working, you need to reprogram the BIOS first. Now in हिंदी, मेरे पास ये DVR आया था। इसमें प्रॉब्लम थी कि इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा था LCD पे। हार्ड इसकी जैसे DVR को हाथ लगाते थे ऐसे महसूस हो रहा था कि ये चल रहा है, ऑन है। तो ये वाली लाइट थी जो रेड वाली, एक एक बार चल के बंद हो रही थी, लेकिन ये DVR का डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो मैंने इसमें इसकी जो बायोस थी, मुझे उसकी बायोस का प्रॉब्लम लगा। जब मैंने इसको खोला है तो मुझे बायोस का प्रॉब्लम लगा, क्योंकि सबसे पहले हमें बायोस ही करके चेक करनी चाहिए। तो इसकी बायोस की है। अब ये देखें, ये वर्किंग में है DVR, ये चल रहा है। और अगर ये मैंने अपने फोरम से, लैब 1 फोरम से, मैंने forum.lab1 साइट से मैंने इसकी बायोस डाउनलोड की है। और अगर आपके पास भी कोई बायोस है DVR या कोई भी किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं बायोस अपनी,
और ये फ्री है और ये हमेशा के लिए फ्री है। ये ऐसे नहीं है जैसे बाकी फोरम में अगर आप अपनी बायोस रखते हो कोई, तो उसके बाद आपको मंथली वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपनी कोई बायोस रखी हुई है और वो कोई कोई भी बाकी भी शेयर यूज़ कर सकते हैं और आप भी यूज़ कर सकते हो उसको, बाद में आपका डेटा सेव रहेगा यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।